The respondents contend that it is the duty of the governor to hold a floor test. The only constitutionally ordained forum is the assembly, and further contend that by whatever process or means the governor can gather the information that was required, which raises a credible doubt as to the majority of a government in power. In support of this contention, reliance was placed on the law laid down by this honorable court in Bomai and in Shivraj. That's their case. शिवसेना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के विद्रोह के आधार पर फ्लोर टेस्ट बुलाने के फैसले पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उद्धव गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कानून और संविधान के प्रावधानों का जिक्र किया और कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किसी सियासी मंशा से कराना गलत है। It is respectfully submitted that the respondent's contention is misconceived and is based on a misreading of the law in Bomai and Shivraj. It is settled law that the governor's decision to call for a trust vote is subject to judicial review, and the same is liable to be quashed if it is based on extraneous considerations. In Shivraj Chauhan, whilst holding that the exercise of discretion by the governor to call for a floor test is subject to judicial review, this honorable court observed that, quote, the court is entitled to determine whether in calling for the floor test, the governor did so on the basis of objective material and reasons which were relevant and germane to the exercise of power. The exercise of such power is not intended to destabilize or displace a democratically elected government. पीठ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुन रही थी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश हो रहे थे। मेहता द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क ये था कि राज्यपाल को वस्तुनिष्ठ सामग्री प्रदान की गई, जिसके आधार पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया। इन सामग्री में शिंदे समूह के 34 विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की पुष्टि करने वाला प्रस्ताव शामिल था। साथ में 47 विधायकों द्वारा उनके खिलाफ उद्धव गुट द्वारा जारी हिंसक खतरों के बारे में पत्र और विपक्ष के नेता का पत्र भी था। Independent MLAs who said, or the MLAs who said, my security is under threat. This was not a report under Article 356. He was not saying that the government of the state cannot be carried on in accordance with the dictates. That's going to be my submission. So the threat to security cannot be a ground for calling for a trust vote. So both those are out of reckoning. The only thing which survives is the impact of the 34. Because may I answer that? May I answer 34 is something which is because 34 in a party which has 55 ML. प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उनके अनुसार राज्यपाल ने दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक कांग्रेस और एनसीपी का संबंध है, कोई आंतरिक गतिरोध नहीं है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल इस बात से बेखबर नहीं हो सकते कि 3 पार्टियों के गठबंधन में सिर्फ 3 में से एक पार्टी में विरोध हुआ है, बाकी 2 मजबूत है। We're not so much on, the mathematics, and okay, now at the end of it, obviously it's very obvious that, they had lost the numbers game. But equally, what is a very serious concern is that governor should not enter into this any area by which their action will in fact precipitate the fall of a government. सीजीआई ने साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल किसी ऐसे क्षेत्र या विवाद में न आए जिसके कारण सरकारें गिर सकती हैं। अपनी तरफ से सीजीआई की ये दलील मायने रखती है, क्योंकि ये राज्यपाल पर एक सख्त टिप्पणी है। ब्यूरो रिपोर्ट।